अस्सलामुअलैकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 20 मार्च 2024, बुध का रोज और बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल, एक क्रिटिकल दिन गुजरा है आज अमेरिका के अंदर एट द यूएस कैपिटल, जहां पे डोनाल्ड लू साहब जो हैं यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स ने हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी को एक बयान दिया, एक टेस्टिमनी दी और उसके अंदर बहुत मेजर इंकशाफात भी हुए हैं। टॉप फॉरमोस्ट इनके अंदर हैं कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, उसके हवाले से अमेरिका के अंदर और अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सीवियर कंसर्न्स मौजूद हैं। तकरीबन 10 से 12 कांग्रेसमैन ने अपेरेंटली सवालात पूछे डायरेक्टली डोनाल्ड लू से, और इसके बाद बहुत सारे कांग्रेसमैन जो उस वक्त सवाल पूछ नहीं सके, वो अपने रिटन कमेंट्स देंगे डोनाल्ड लू साहब को। मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं जो मैं प्ले आउट करूंगा। इसके अंदर से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रैड शर्मन साहब की क्लिप, जो उनके सवालात पूछे गए डोनाल्ड लू से, वो बहुत क्रिटिकल है। ग्रेग कसार ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। ये सब प्ले आउट करेंगे, इसके ऊपर तबसरा भी आपके साथ जारी रखूंगा। मगर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, 2 साल इस पूरे प्रोसेस को लगे। डोनाल्ड लू साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी कहानी के अंदर। अगर आपको याद पड़े कि इनके ऊपर ही इल्जामात लगे थे कि इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अंदर किरदार अदा किया था। डोनाल्ड लू साहब ने आउटराइट इन सब चीजों को डिनाई किया। उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा गया कि क्या आप इन्वॉल्व थे इमरान खान की हुकूमत गिराने में। वो कहते कि ये सरासर झूठ है, इसके बेबुनियाद इल्जाम है, उनका कोई हाथ नहीं था। इसके साथ साथ मगर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, जो सिचुएशन है, इरेगुलरिटीज थी इलेक्शंस के अंदर, और ये आइडेंटिफाई भी की थी इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स ने, वॉच डॉग्स ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनवायरनमेंट में आपको प्ले करता हूं थोड़ी बहुत क्लिप्स यहाँ पे, कि आप देख सकें कि क्या एक्सचेंजेस हुई। बिगिन करेंगे ग्रेग कसार की क्लिप से। And transparent investigation on election interference had new government in Pakistan until a credible and transparent investigation on election interference had been conducted. I know that the U.S. Embassy congratulated Mr. Sharif, quote, on his assumption of the office of Prime Minister, but I haven't seen a statement yet from the State Department itself. So just so we're clear at this point, yes or no, has the U.S. officially recognized the new government in Pakistan? Representative Kesar, I would like to answer with yes or no. The actual answer is a little more complicated, if you'll allow me. The government of the United States, we don't actually go around recognizing or withholding recognition of new governments. That's not something we do anywhere around the world. What we do is we decide whether we're going to engage with a government. And so, yes, you have seen actions by our ambassador, our embassy. We are, in every interaction with this government, stressing the importance of accountability for election irregularities, sir. Can I just also add, your letter is incredibly important. It's important that the Pakistani people, the Pakistani government hear not only from the administration, but from members of Congress, and having so many of them speak together has real influence. The administration largely agrees with your recommendations. We have done many of the things that you have proposed. We have said publicly and privately that we want to see transparent and credible investigation of election irregularities. We have called for accountability for mass detentions of people in the opposition, and we have said loudly and clearly that military trials for civilians accused of crimes after May 9th is not in keeping with international norms. I appreciate that. And so in other cases, for example, in the case of Venezuela or some other countries where the State Department has spoken out very clearly about election rigging, and we can talk about separately about how it is that we treat those governments or treat those countries, but it seems that when we have had allegations of election rigging, that we've spoken out much more clearly than in this case. And I would urge that we continue to speak with the level of moral clarity that we have in other situations. But I appreciate your recognition and speaking out here today about how it's not okay for us to be having journalists jailed, for Twitter to get shut down, for there to be this continued, very clear
to me, interference in democracy. Given the credible allegations of fraud and rigging, what gives you confidence that this government will have the democratic legitimacy necessary, not only for the interests of the Pakistani people, but for the interests of the United States? Sir, the political and economic stability of Pakistan is important for the United States. It is important that the Pakistani people... And I'm short on time. Is it your sense right now that there is going to be that democratic legitimacy, or do we have real concerns? I'm sorry, I have one more question for you, so just give me your... Sir, I think that's up to the process ongoing now in the Electoral Commission of Pakistan. One more question. Most security assistance to Pakistan has been suspended since 2018. Recently, the Pakistani ambassador said that Pakistan's awaiting a decision from the U.S. on increasing military sales and financing. Yes or no, are there ongoing conversations about increasing military assistance to Pakistan? No ongoing conversation about large-scale increases, no. That's good to hear. Given that the U.S. has already sent hundreds of millions of dollars in aid, are there any steps the State Department is taking to ensure that the aid we send is not used for any of these abuses that you've identified? Sir, absolutely. There is very close monitoring of where our military assistance goes around the world, including to Pakistan. For example, the F-16s sold to Pakistan over 40 years ago have active U.S. technical security teams monitoring their use every day. Thank you for that. Has the U.S. identified any units of military or security forces that would not be eligible for aid? Yes. We have identified those. Thank you. Thank you for your clear answers. Thank you for... ये लास्ट बिट जो थी कि अमेरिका ने क्रेग कसार ने पूछा कि हैज द यूएस आइडेंटिफाइड एनी इंडिविजुअल्स दैट माइट बी एंटाइटल्ड फॉर सेंचर इन पाकिस्तान, तो उसके ऊपर डोनाल्ड लू साहब का जवाब आया यस। ये बहुत एक क्रिटिकल एलिमेंट है और ये आखिर में इन्होंने क्रेग कसार की जो एक्सचेंज हुई इनके साथ उस पर कहा और बेसिकली एडमिट किया कि जो 9 मई के बाद वाकयात पेश आए हैं पाकिस्तान में, अरेस्ट और डिटेंशन हुई हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, डोनाल्ड लू साहब ने क्रेग कसार को कहा कि हमने ये इनकशाफात, ये रिजर्वेशंस और कंसर्न्स पाकिस्तानियों तक पहुंचा दी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि अगर क्लियर वायलेशन हुई है डेमोक्रेसी की क्रेग कसार ने, तो क्या फंडिंग, हम मिलिट्री फंडिंग या फंडिंग वहां पे जाएगी, तो उसके ऊपर वो थोड़ा एक सवाल उन्होंने आगे बढ़ाया कि मिलिट्री असिस्टेंस क्या पाकिस्तान को देने की आगे बात चल रही है पाकिस्तानियों से, तो उसके ऊपर आपके डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि नो, ongoing conversations about large scale military assistance to Pakistan are not taking place. बहुत क्रिटिकल ये एक्सचेंज रही है और डोनाल्ड लू साहब जिनके बारे में इतनी बातें की गई, साइफर के ऊपर हम बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल 2022 की, मार्च 2022 की फेयरवेल एड्रेस था एम्बेसडर असद मजीद का यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे डोनाल्ड लू साहब जो सबसे पॉइंट मैन है बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत क्रिटिकल इनका रोल है और इनकी कॉन्वर्सेशन से पता लगा है कि कितना क्रिटिकल ये रोल है। इन्होंने पाकिस्तान में पेशावर में भी टाइम गुजारा, ये कहते 30 साल पहले इनकी मुलाकात अपनी वाइफ से पाकिस्तान के अंदर हुई जो एक एड वर्कर थी, यहाँ पे काम कर रही थी वुमेन्स राइट्स के ऊपर, तो ये बहुत गहराई से पाकिस्तान को जानते हैं, समझते हैं और इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई इवेंचुअली इमरान खान तहरीक इंसाफ साइफर केस को लेके कि इनका किरदार बहुत ही बुरा रहा, यानी वाजंट वेलकम एज सच के इनका कोई किरदार था नहीं, उसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट डिनायल की कि कोई किरदार नहीं रहा किसी अमेरिकन ऑफिशियल का या इंडिविजुअल या कॉन्ट्रैक्टर का पाकिस्तानी इमरान खान को हटाने में, हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं था। इसके साथ साथ डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बात की कि अमेरिकन और पाकिस्तानी मिलिट्री रिलेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, डेकेड्स ऑन डेकेड्स पाकिस्तानी जनरल्स ट्रेन अलोंगसाइड अमेरिकन जनरल्स। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि पाकिस्तान इस वजह से बहुत ही सिक्योरिटी की वजह से बहुत क्रिटिकल एक एलाय कह लें, मेजर नॉन नेटो एलाय अमेरिका का है। अच्छा, इसके ऊपर बात हुई छिड़ी, ब्रैड शर्मन साहब हैंगे एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन, उनकी मैं स्पीच प्ले करता हूं। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक ली कि आफिया सिद्दीकी और ये जो आफरीदी साहब हैं जो उसामा बिन लादेन साहब के केस के अंदर, डॉक्टर आफरीदी जो 15-16 साल हो गए इस बात को मेरे ख्याल से अबाउट के 15-16 साल 13 साल हो गए उनको पकड़े हुए और पाकिस्तानी जेल के अंदर हैं।
तो इस कॉन्वर्सेशन को आप लोग जरा सुने और देखें कि ब्रैड शर्मन और डोनाल्ड लू की क्या एक्सचेंज रही. Generals in Pakistan to visit the United States when American citizens can't leave Pakistan and come to the United States. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. And this is, I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. That's the same judicial system that has Dr. Afridi in jail for 14 years for getting bin Laden. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? Or is it apparent that he has been? Sir, following the rioting on May 9th, the day Imran Khan was arrested, the United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison to make sure that he lives to tell the tale. ब्रैड शर्मन कह रहे हैं डोनाल्ड लू साहब से कि जो यूएस एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लोम, वो उनको चाहिए कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करें और इस बात का यकीन करें कि वो जिंदा रहें, क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में मारने की साजिश की जा रही है, उनको हटाने की साजिश की जा रही है. तो अभी एक कंग्रेशनल हियरिंग के अंदर एक मेंबर ने आके सीधा मैसेज भेज दिया है यूएस गवर्नमेंट को, डोनाल्ड लू साहब को, कि यूएस एम्बेसडर को जाके मिलना चाहिए. और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अपना हम इन कोर्ट्स, जो कोर्ट सिस्टम है, जो अकाउंटेबिलिटी की डोनाल्ड लू साहब बात कर रहे थे, उसके ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है इस सिचुएशन के ऊपर. ये कॉन्वर्सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा, मगर सुने कि अगले जो आए कांग्रेसमैन, उन्होंने क्या कहा इस सिचुएशन के ऊपर. Thank you, Mr. Chairman. Excellent questions. Representative Baird is not here, so I'm the next in line. Secretary Lew, could you provide insight in the involvement of the military in the politics of Pakistan? Hold on. Y'all don't need to clap for me. I'm good. I'm good. We're good. Thank y'all. Go ahead, brother. The Pakistani military is the sixth largest military in the world, and the largest of any majority Muslim country. The U.S. military has historically had very close relations with the Pakistani military. Our generals and their generals have trained together decade after decade. It is an important part of Pakistani culture. I have lived in Pakistan. I have seen that for myself. The Pakistani military is an important institution. We respect, in this administration and all past American administrations, the constitutional principle that the Pakistani military must be kept under civilian control. It must be answerable to the president. But is it? Answerable to the president, sir, who is the commander-in-chief, and responsible to civilian control. Okay. Do y'all at the State Department intend to conduct a review of the most recent elections in Pakistan? Sir, we have conducted that review, and we have found a number of election irregularities that I've detailed today. Right. What we are undertaking right now is a monitoring of how the democratic institutions of Pakistan will address those irregularities. Well, I would suggest to you that a strong letter is not doing a whole heck of a lot. I would tell you that this country needs to start using its economic might to correct some of these wrongs. These people are being mistreated. I'm not much on bureaucrats. I don't like writing letters. I like delivering it personally, and I think that's something we could do.
Did the U.S. ask for former Prime Minister Imran Khan's removal after he visited Russia? That we did not, sir. Okay. There are people who believe you were involved in the regime change in Pakistan. Can you speak on that? Sir, I was absolutely not involved, nor were any Americans involved with that process. None whatsoever. None whatsoever, sir. Not contractors, not. None. Not one. Okay. In aid to Pakistan being withheld, is aid to Pakistan being withheld? यहाँ पे पॉज करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफ डोनाल्ड लू का दिखा दूं आपको मैं थोड़ा इसके साथ साथ उन्होंने पूछा ये रिप्रेजेंटेटिव विल्सन है ये चेयर हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के और इनका सवाल था डोनाल्ड लू से कि आप क्या इन्वॉल्व थे रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व था पूछा गया कि इमरान खान हुकूमत ने जब इमरान खान ने विजिट किया रशिया को तो उसके ऊपर क्या कुछ इकदाम उठाए थे अमेरिका ने तो डोनाल्ड लू साहब ने कहा बिल्कुल नहीं उठाए थे फिर रेप विल्सन ने कहा कि जी वो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इतना यकीन नहीं रखते ही डजंट बिलीव इन ब्यूरोक्रेसी एंड लेटर राइटिंग कि खतो खिताबत से वो समझते हैं ये काम नहीं हो सकता तो पुश करने की जरूरत है एक्शन की जरूरत है कि अगर तो इश्यू मौजूद हैं तो लेटर राइटिंग से ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते लेट्स कंटिन्यू लेट्स लिसन टू व्हाट representative विल्सन कह रहे थे डोनाल्ड लू साहब से Because Pakistan refused to vote against the Russian invasion of Ukraine at the United Nations General Assembly. No, sir. All right. I have a little more time left. Do I have any members? I tell you what. I'll just remove that. ये एक्सचेंज बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि डायरेक्टली पूछा गया डोनाल्ड लू साहब से इस हियरिंग के अंदर इस टेस्टिमोनी के अंदर के क्या आप इन्वॉल्व थे आपका क्या किरदार था तो उसके ऊपर कहा कि जी मेरा कोई किरदार नहीं था मगर इसके साथ साथ ये तो एक चीज है ये माजी का हिस्सा है डोनाल्ड लू साहब ने अपनी हियरिंग के अंदर ये भी कहा कि पिछले 2 साल से जब से उनके ऊपर ये इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने हुकूमत गिराने की कोशिश की है तो उनको डेथ थ्रेट्स भी मिली हैं उनकी फैमिली को भी डेथ थ्रेट्स मिली हैं पुलिस को भी उन्हें कॉल करना पड़ा है प्रोटेक्शन के लिए तो इनकी जिंदगी भी एक तरीके से बहुत ही हराम कर दी गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान मगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट एलाय है अमेरिका का इतनी उसकी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि वहां पे जो भी हो रहा है या जो भी होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है अमेरिकन सिक्योरिटी सिचुएशन और सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन थी यहाँ पे वो मैं उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की मगर इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को जो अमेरिका का इंडो पैसिफिक प्लान है क्वाड की हम बात करते हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है टू कंटेन चाइना आप कह लें तो उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट एलाय है अमेरिका का तो इसको अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में क्यों नहीं ऐड किया गया जिसके ऊपर डोनाल्ड लू साहब का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग था उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए जो उनके मिलिट्री कमांड्स जिस तरह हैं सेंटकॉम है इस तरीके से तो पाकिस्तान जो अमेरिका का परव्यू है मिलिट्री का वो एंड होता है इंडिया और पाकिस्तान के इंडो पैसिफिक की जो डेफिनेशन है उनकी वो एंड होती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर मैरिटाइम बॉर्डर के ऊपर कि जो इंडो पैसिफिक रीजन और चाइना सेंट्रिक और क्वाड है वो वहां पे अमेरिका एक लाइन ड्रॉ करता है व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग फाइनली एक और कांग्रेसमैन थे फ्लूजर करके ये थे टेक्सास से इनके सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट थे तो अब मैं उन्हें प्ले करता हूं आपके लिए एंड सी के फ्लूजर साहब क्या कह रहे हैं An interested citizen, as somebody who believes in free and fair elections, and really just want to get a general assessment regarding the fairness of the elections in Pakistan. What your general thought is before I go into some deeper questions. Sir, we share the view of local election observers who have, in summary, said this was a competitive and orderly election, but they note irregularities in the compilation of the results that should be fully investigated. Do you believe that the recent election was free and fair? Sir, we have never used the term free and fair in the characterization of this election. To what level, then, would you say interference happened? Sir, we have expressed, and I've said this multiple times today, serious concerns about the pre-election environment,
violence that occurred, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. इम्पोर्टेंट इंकशाफ इनसे पूछा गया रिप्रेजेंटेटिव फ्लूजर जिनका रिपब्लिकन है ये टेक्सास से इनका ताल्लुक है उन्हें पूछा कि आप क्या इन इलेक्शंस को फ्री और फेयर यानी आज़ाद और खुले कहेंगे तो ऊपर से डोनाल्ड लू साहब का इंकशाफ आया कि हमने यानी अमेरिकन हुकूमत ने स्टेट डिपार्टमेंट में कभी भी पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शंस को फ्री और फेयर करार नहीं दिया तो यानी फ्री ऑफ इलेक्शंस नहीं हुए ये खुद ही इंकशाफ कर रहे हैं डोनाल्ड लू साहब कह के कि फ्री ऑफ फेयर इलेक्शंस नहीं हुए आई विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन सुनिए जरा Do you believe that those without those specific examples, and would definitely like to hear more examples, but without those examples of interference, I'm not sure if you're going to use that term, but please tell me what adjective you would use to describe it. And without those things having happened, would the election results be different? Sir, you ask an important question, and I think the answer to your question is the Election Commission of Pakistan, should it find that these irregularities are substantiated, should rerun elections where there's been interference. And that's the way the Pakistani people will know. It's probably unlikely that an American diplomat will know whether or how the results would turn out, but they'll turn out the way they should if the Election Commission reruns constituencies. What is the Department of State doing to urge Pakistan, the government of Pakistan, those that govern the elections to do just that? Sir, we have made very clear public and private statements. We have said so clearly to Pakistan's leaders, but also to election officials, that it is an expectation of all of Pakistan's partners, not only the United States, that they conduct elections with integrity. So you believe these should be fully investigated and adjudicated? Yes, sir. Tell me what this does to the relationship between the United States and Pakistan if they are not investigated, if they are not adjudicated, if they do not decide to rerun their elections. We have enjoyed 76 years of partnership with this country. It will be an impediment to our relationship if Pakistan does not have a democratic process that upholds its own constitution. It will retard our ability to have the type of relationship we want in security matters, on business fronts, and people to people. All of that suffers if Pakistan is not a full democracy. Recently, I marked up in the Committee of Home. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर ये इलेक्शंस की अकाउंटेबिलिटी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ नहीं हुई इट विल बी एन इम्पेडिमेंट यानी एक रुकावट बन सकता है ये प्रोसेस यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में 76 साल रिलेशनशिप डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि अगर इसकी सही इंक्वायरी नहीं हुई तो ये एक इम्पेडिमेंट बन सकता है अमरीकी और पाकिस्तानी रिलेशन में इनफैक्ट ये कह रहे हैं जो अल्फाज इस्तेमाल किया रिटार्ड कर सकता है ये प्रोसेस को डिप्लोमेटिक टाइज के अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जो धांधली हुई है हमारे सामने बज़ाहिर तौर पे जिसका अब डोनाल्ड लू साहब जो अलेज्ड इनके ऊपर इल्जामात भी लगे थे वो खुद इंकशाफ कर रहे हैं आके कि जी धांधली हुई थी और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि अगर तो जो हलकों के अंदर धांधली हुई है वहां पे इलेक्शन अगर रीरन उनको करवाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो ये एक रुकावट बन के खड़ी हो सकती है पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान आगे सुनिए Homeland Security, a bill that will soon go to the full committee in the Homeland Committee on transnational repression. Is the State Department monitoring reports of transnational repression made by Pakistani Americans? And if so, what steps is the State Department taking to address these topics? Sir, we are tracking transnational repression around the world, including with respect to allegations made about Pakistan. We are looking very closely at the examples offered. If we find that they are substantiated, we will address them directly with the Pakistani government.
I thank the witness. Mr. Chairman, once again, thank you for letting me wave on. Yield back. Thank you very much. तो ये थी सिचुएशन आपके सामने जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और इनको For बेसिकली जो being here through कन्वर्सेशंस this चलती hearing, आ and I रही hope हैं that we can अमेरिका के अंदर इतने हाई लेवल के ऊपर इलेक्शंस को लेके धांधली को लेके पूरे प्रोसेस को डाइसेक्ट किया गया। इस तकरीबन 1 घंटे की मेरे ख्याल से हियरिंग थी और हर कांग्रेसमैन आया। इसके ऊपर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर भी बात हुई। डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि जी हमारी बात चल रही है पाकिस्तानियों से, मगर उन्होंने अभी तक वेवर नहीं मांगा है बेसिकली इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि वो कंप्लीट कर सके पाइपलाइन। तो एक तरफ तो यहाँ पे अफवाहें चल रही थी कि जी अमेरिका इजाजत नहीं दे रहा, मगर अमेरिका के अंदर, और ये बात हमने रिपोर्ट भी की थी, आयशा सिद्दीका को भी हम लेके आए थे इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए कि पाकिस्तान ने तो अभी तक इजाजत ही नहीं मांगी बेसिकली कि इस प्रोसेस को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। मगर बहुत ही एक टेंस कह लें हियरिंग थी क्योंकि पीछे जब डोनाल्ड लू साहब बात कर रहे थे तो पीछे इसके बातें चल रही थी, आवाजें आ रही थी, लायर लायर यानी झूठा झूठा कह रहे थे, चिल्ला रहे थे। जो लोग बैठे थे पीछे पाकिस्तानी अमेरिकन भी होंगे, उसके अंदर एक्सपर्ट्स भी होंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस यहाँ तक पहुंचा है इसको यहाँ तक लेके आने में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार था। और ये सवालात जो पूछे गए हैं, ये सवालात पहुंचाए जो गए कांग्रेसमैन तक, कांग्रेस वुमेन तक, इसमें वुमेन राइट्स की बात हुई, उन खवातीन की भी बात हुई जो जेल के अंदर पड़ी हैं 9 मई से। इसके अंदर अमेरिकन सिटीजन्स की भी बात हुई। ब्रैड शर्मन ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया था कि उनकी मैंने रिकॉर्डिंग चलाई भी थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप पाकिस्तानी जर्नैलों को इधर आने दे रहे हैं, अमेरिका के अंदर एंटर होने दे रहे हैं, मगर सौओं की तादाद के अंदर, दर्जनों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अब वो कौन अमेरिकन है हमें नहीं पता, मगर डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि हमारी इस मौजू के ऊपर भी बात चल रही है। कीप इन माइंड पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन 9 मई के वाकयात के अंदर जेल भी जा चुके हैं, जिसके अंदर खदीजा शाह साहिबा भी मौजूद थी। उनके ऊपर भी बेसिकली आप कह लें कि एक जुडिशियल तशद्दुद किया गया और फिर उनको कहां-कहां भेजा गया। पहले तो पंजाब के जेलों में रखा गया उन्हें, पंजाब पुलिस के अंडर, फिर उन्हें भेजा गया कोयटा और फिर वो फाइनली बेल के ऊपर रिलीज हो गई। उनकी बेल हियरिंग्स पता नहीं कितनी बार 10-15 टाइम्स ऑफ बेल हियरिंग्स उनकी डिले की गई। वो तो निकल गई, मगर दूसरी तरफ अभी भी बहुत सारी खवातीन जो हैं वो जेलों में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर सफर कर रही हैं। यास्मीन राशिद फॉर एग्जांपल। इमरान खान का एक बहुत क्रिटिकल यहाँ पे हर कांग्रेसमैन ने जो बात की है कि जी, और डोनाल्ड ब्लोम को तो ये भी कहा गया एम्बेसडर को कि जाके आप मिलें और इंश्योर करें कि वो जिंदा रहें, कि अपनी कहानी बता सकें। ब्रैड शर्मन ने ये कहा था बेसिकली। तो वेरी इंपॉर्टेंट हियरिंग, डोनाल्ड लू स्टेटमेंट, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो फाइनली बाहर आ गया है खुल के लोगों के सामने। इल्जामात जो उनके ऊपर लगे थे वो उन्होंने डिनाई किए हैं, मगर जो बर्बरियत, फैशिज्म पाकिस्तान में जारी है पिछले 1.5-2 साल से, ये अब बहुत एक बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तानी और अमरीकी रिलेशंस के दरमियान। और ये चीज एक शुरुआत है। ऐसी जब कमेटी हियरिंग्स होती हैं और इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है आंसर करने के लिए, तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर वो चीज आ गई है। और सिस्टम के अंदर वो एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे वो चीज आई है कि इलेक्शन ईयर भी है अमेरिका के अंदर, जो बाइडेन फंसा हुआ है गाजा के अंदर भी, स्टेट डिपार्टमेंट की अपनी कंपल्शंस हैं, इजराइल को वो एक तरफ से जगल कर रहा है, दूसरी तरफ से अब ये पाकिस्तान के इश्यूज, पाकिस्तानी अमेरिकन के इश्यूज भी सामने खुल के सामने आ रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्या होता है। आपके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो गए हुए थे उम्रे पे पिछले कुछ दिनों में, वहां मुलाकात भी हुई इनकी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, मोहम्मद सलमान साहब के साथ, उनके साथ मोहसिन नकवी भी थे और बिजनेसमैन भी थे दीगर। तो आईएमएफ की भी बात भी हुई कि हम पाकिस्तान को इतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा किधर जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या वो मिलिट्री की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि जी जो भी पैसा जाता है असिस्टेंस अमेरिकन, वो अकाउंटेबल होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। आईएमएफ ने अभी क्लियरेंस दी है $1.1 बिलियन की पाकिस्तान की, जो लास्ट ट्रांच रह गया था पिछली एडजस्टमेंट का। अब जो अगली एडजस्टमेंट आएगी अप्रैल के अंदर, वो बहुत क्रिटिकल होगी, क्योंकि वो आएगी इस टेस्टिमोनी के बाद। और जो कुछ भी इस टेस्टिमोनी में डोनाल्ड लू साहब ने कहा है वो एविडेंस बन जाएगा
कि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो सवालात पूछे हैं, जो कांग्रेसमैन आपके सामने बैठे हुए थे यहां पे, ये सब बेसिकली कॉलेट हो गए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि दब गया हमूदुर रहमान रिपोर्ट, ये सब कुछ। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, यूएस कांग्रेस के अंदर एक इदारा है बिल्ट इन, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस। वो हर पैसा जो फॉरेन ममालिक में जाता है, एवरी पेनी दैट इज स्पेंड ऑन फॉरेन गवर्नमेंट्स या बाहर भेजता है अमेरिका, उसका वो एक अकाउंट रखता है। और ऐसी टेस्टिमनीज के साथ जहां पे यूएस खुद ही एडमिट कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, इलेक्शंस रिग्ड थे, 9 मई के बाद डिटेंशंस हुई, ये सब बातें, इंटरनेट बंद किया गया, लोगों को अंदर किया गया आर्बिट्रेरली, इमरान खान को एक बल्ला भी ले लिया, ये भी जिक्र किया ब्रैड शर्मन साहब ने कि जी बैट भी ले लिया, बैट सिंबल भी ले लिया और बैट्समैन को भी हटा दिया। तो ये बातें अब खुल के इस तरीके से हो रही हैं, इस मिकदार से हो रही हैं अमेरिका के अंदर, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ पॉज, टाइम आउट। और स्पेशली आपका डोनाल्ड लू आके कह रहेगा कि भाई ये हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो कैटेगराइज ही नहीं किए। तो यानी जो टॉप डिप्लोमैट है अमेरिका का साउथ एशिया को लेकर, वो कह रहा है कि जी ये फ्री और फेयर इलेक्शंस थे ही नहीं। डोनाल्ड ब्लोम साहब ने अस्यूम करने पे ऑफिस बाद मुबारकबाद जरूर दी शहबाज शरीफ साहब को, मगर जो सूरत हाल है अमेरिका के अंदर वो बहुत मुख्तलिफ दिख रही है डोनाल्ड लू साहब के परस्पेक्टिव से, अमेरिकन कांग्रेसमैन के परस्पेक्टिव से भी। मैं इस मौजू पे आपके साथ ऑफ कोर्स आता रहूंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा youtube.com लेट अली शो यू, शो का नाम है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म फ्री स्पीच की बात भी हुई इस कंग्रेशनल हियरिंग के अंदर। अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक वो होता है कि जी फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जारी रखा जाए, स्पेशली उन ममालिक के साथ जिनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। और जिस तरीके से एक्स को बंद किया गया, उस बात का भी जिक्र किया गया, तो सबकी नॉलेज में ये चीज है। अगर आप यहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि जी हम जो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमें, फ्री फॉर ऑल है हमारा, हमारी माइट मेरी लाठी मेरी भैंस, अवाम गई घास चरने, वॉट एवर, दिस डजंट फ्लाई इन द यूएस, क्योंकि वहां पे फिर भी अकाउंटेबिलिटी है। ये नहीं पता हमें, डोनाल्ड लू साहब तो कह रहे हैं मैं इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर, इंट्रीग नहीं थी। अमेरिका की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी रही है फॉरेन मेडलिंग की, फॉरेन इंटरवेंशनिज्म की, मगर उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि उनका जो जुडिशियल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन 1754, यानी कितने साल हो गए, 250-300 साल से अमेरिका के अंदर ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, एवोल्यूशन चल रही है। तो बाहर उनके जो ताल्लुकात हैं, सिस्टम है, सो है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स भी हैं, मगर जब अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है और इस टेस्टिमनी से जो साबित होता है हमारे सामने कि इतनी आसानी से चीजें नहीं हो सकती, और क्योंकि एक चीज हो गई है, अब उसका जो रिएक्शन आ रहा है, जो एक्शंस आपने लेने थे अप्रैल 2022 से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो आपके अपने मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी हमें तो बाजवा साहब ने और फैज हमीद, जनरल फैज हमीद आईएसआई चीफ ने पुश किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, हम नहीं चाहते थे, ये सब बातें हो रही हैं। तो अब वो खुल के एक टेस्टमनी, एक केस बन के सामने उभरी हैं, जो एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है। ये यहाँ पे जो निजाम चल रहा है पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है। ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है इंटरिम सेटअप के लिए, ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, क्योंकि अब अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट ने आके कह दिया कि जी हमने पाकिस्तानी इलेक्शंस को कभी फ्री एंड फेयर कैटेगराइज किया ही नहीं। आप क्या समझते हैं? डू राइट, सब्सक्राइब और कमेंट्स अपने डालते रहें। आई विल बी फॉलोइंग अप ऑन दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, आवर्स। इतना इसके अंदर मवाद है, इस कहानी के अंदर, इस टेस्टिमनी के अंदर, कि उसको डाइसेक्ट करने के अंदर, सिफ्ट थ्रू करने में, देखने में क्या चीज क्या हुई, टाइम तो लगेगा, मगर मैंने आप तक हाईलाइट जो मुझे नजर आई वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अपना ख्याल रखें, एंड ऑफ कोर्स कीप फॉलोइंग, फॉलो ऑन ट्विटर एज वेल एट Ali_Mustafa। अल्लाह हाफिज।